अस्सलाम viewers of I hope आप सब लोग ठीक होंगे. Today our lecture about solids, solid state. We'll discuss about the solid state. First of all, we know about the solid state of matter having definite shape, definite shape and volume, definite shape and volume between the particle they will discuss about the properties of solids. Crystalline solids, properties of crystalline solid. Very important topic according to Federal Board. Properties of crystalline solids. Eh, First of all, we'll discuss about the first property of crystalline solid. They are rigid. Why they are rigid? First property is rigidity. Rigid, rigidity, rigid structure. Some crystalline solids have rigid structure because solids have strong intermolecular forces. Just like that, their particles have strong intermolecular forces between them so that they are arranged in three dimension three-dimensional structure. Y-axis, x-axis, z-axis. So solid particles have strong intermolecular forces and have three-dimensional three-dimensional structure. So they are rigid. Second one property is isomorphism and polymorphism. Very famous question. What is the difference between isomorphism and polymorphism? Isomorphism and polymorphism. First of all, we'll discuss about these two words. What is meant by polymorphism and isomorphism. First of all, we'll go to
Meaning of that word isomorphous. Isomorphous means same form. Polymorphous means different form. Poly means two or more than two. Different form, two or more than two different form. Let's talk about what is difference between isomorphism and polymorphism. Isomorphism and polymorphism. First of all, we'll discuss about the definition of these two parameters. Example of isomorphism is two crystals that are NaNO3 is one crystal and KNO3 is another crystal. They both have same shape, means shape, rhombohedral shape, because they have atomic ratio atomic ratio is 1:1:3. They have same atomic ratio. That's why they have similar structures. Then we'll move toward another example, Ag2SO4 and Na2SO4 both have hexagonal structure because the atomic ratio is 2:1:4. Another example that is that are ions like Na, N3, NO3 minus 1 nitrate and carbonate. These two ions have almost same shape, that is triangular, planar, because its atomic ratio is 1:3, so that ions are same shape. Here we'll discuss about the definition regarding example when two uh, two crystals or two crystalline forms or exist in same shape, that is known as isomorphous, and that process is known as isomorphism. When different crystalline crystalline solids have same shape, having same shape, same structure,
same structure called isomorphous, and this process is known as isomorphism. Then we'll discuss about the example of polymorphism, just like NaCl is a common example of polymorphism. NaCl have cubic structure as well as octahedral structure. It means one crystalline solid having two different shape or two different crystalline structure is known as polymorphism. Just like CaCO3, they are exist in two forms, calcite and argonite. Argonite in calcite, its structure will be orthorhombic, and other will be tetragonal. Calcite having orthorhombic structure, its will be tetragonal structure. It means when one crystalline solid having two different crystalline form is known as polymorphism. We'll discuss about the polymorphism. Crystalline solids having two different crystalline structure called polymorphism. Whenever the crystalline structure have two different crystalline form called polymorphism, polymorphous, and this process is known as polymorphism. Then the other difference is isomorphism. The structure of isomorphism is the structure of isomorphism depend upon atomic is depending upon atomic atomic ratio of atoms, but the polymorphism, their structure their structure do not depend upon do not depend upon atomic ratio
Number four is uh, isomorphism have different chemical and physical properties, different chemical and physical properties, but in polymorphism, chemical properties are same, but physical properties are different. That is a basic difference between polymorphism and isomorphism. Physical properties are different from each other in polymorphism. Then there is very famous question regarding Fed report. What is difference between polymorphism and isomorphism? Then I will discuss about next property, that is habit of crystal. Next property is habit of crystal. First of all, we'll discuss about the habit of crystal. Habit of crystal means crystal shape of crystal in which crystal can grow. Shape in which crystal can grow is known as habit of crystal. First of all, we'll discuss about the definition. Shape of crystal in which crystal can grow. What does it mean? Crystal can grow. We'll discuss with the example just like NaCl. NaCl has used the cubic shape. Cubic is the habit of crystal. NaCl has habit of crystal is cubic because in cubic shape NaCl exists. If a small impurity like 10% urea is added in this structure, then the arrangement of NaCl is octahedral. So if any impurity is present in the NaCl structure, it must have habit of crystal is octahedral. So you can clear the topic with the example. Then we will discuss about the growth of crystal. Growth of crystal. First of all, we know about the how the crystal will be grow. Growth of crystal is just like when when heated solution is cooled down, then growth of crystal can take place. By cooling
of heated solution, growth of crystal can take place. Growth of crystal crystal can take place when heated solution of any crystal is cooling down, then the crystal can grow in such a way that if cooling is rapid cooling take place, then the crystal will appear. Crystal can cause big and not refined crystal, large and unrefined crystal. Unfined crystal can grow if cooling is slow. Slow cooling can cause a small and refined crystal. Slow cooling can cause small and refined crystal. So we will discuss about the growth of crystal as well. Then we will move toward next property, isotropy. And isotropy. That is another property of the crystalline solid is anisotropy properties. Anisotropy mean to say that their properties differ uh, from differ in different direction. Different arrangement of particles show different direction, have different properties. An isotropic property of crystal is such like that if a crystal, the orientation of crystal is changed, then the property of crystal will be changed. Then we will discuss about the anisotropy properties. Anisotropy. We will discuss about the example. With the example, just like graphite, if we to look the structure in the parallel direction, then it is a good conductor. When the graphite look in the parallel direction, it is a good conductor. If we look into the structure along the perpendicular direction, it is a bad conductor because in parallel direction, graphite has a free electrons present in the structure. If we look the perpendicular direction, at the perpendicular direction, graphite show no free electrons in their structure. So the crystalline solid, the property of crystalline solid change with the change in direction. Crystalline solids having
The property that change in direction, that with change in direction, that is known as anisotropy. So, such like that anisotropy property is refractive index. Refractive index is also anisotropic properties of the crystal. Refractive index, electrical and thermal conductivity is also electrical and thermal conductivity is also anisotropic properties. Conductivity is also property of crystal is anisotropic property that change in direction. So we will discuss about the next property, that is cleavage plane. Cleavage plane. Cleavage plane, just like that, any crystalline solid break into smaller one, break into smaller one, whether it cleave along a 90 angle perpendicular or a horizontal. It is converted into same size and same shape crystal, same size and same shape crystal, that is known as cleavage plane. Whenever the crystal break into small size, it will break into same size and same shape, that is known as cleavage plane. Plane that break break the crystalline solid, the crystal into the same size and shape is known as cleavage plane. That is, first example is so nickel sulfate 6H2O has parallel cleavage plane, means horizontal cleavage plane that have parallel to structure is a cleavage plane of nickel sulfate hexahydrate. Another example is calcium carbonate and acidic calcium acidic anhydride has also a parallel cleavage plane. It means that whenever crystal break into same size and same structure, the plane cut the crystalline structure into small pieces, same size and same shape, having same size and same shape. That plane is known as cleavage plane. So we will discuss about the next property, which is symmetry.
First of all, we'll discuss about the symmetry. Symmetry, what is meant by symmetry? If a crystal crystalline solid rotates at the angle of 360 at the angle of 360, which repeat the repetition of faces, angle and edges, that is known as symmetry. It means when a crystal rotates to the angle of 360, the similar structure is appear that is similar to parent one. Okay, the crystal which rotate the angle of 360, which repeat the angle edges and faces of the crystal. Repetition of, we will discuss about the definition of symmetry. Repetition of angle, edges, faces when the crystal will rotate at the angle of 360 degree. And then there are the three symmetries. Number one, center of symmetry. Number two is angle of symmetry, axis of symmetry, axis of symmetry. Number three is plane of symmetry. We will discuss about these three symmetry with the help of examples. First of all, we'll discuss about the center of symmetry. If any crystal having Cu atom and boundaries of particle is same, just like NH3, NH3, NH3. So here we will discuss about the center of symmetry. The definition of center of symmetry is the distance from edges of edges to center will be same, and distance from edges to center is same. Whenever the molecule is attached in both edges, that center of distance will be same. So we can discuss about the definition. Okay, when the center of atom having same distance from both sides, from all sides that have a center of symmetry. If any atom which is present in the center of the crystal having same distance in all sides of the particles, in all sides of the particle that have center of symmetry. Whenever we discuss about the angle of symmetry, that is axis of symmetry,
That explain with the example of BF3. When one axis rotates about one axis rotate to the angle of 360, that will have same structure just like first one, that is the angle of symmetry. When the plane of symmetry is explained, the structure of benzene is an example of plane of symmetry. Whenever we will break the structure of benzene, that is the one half is a mirror image of other half. When a molecule cut into small pieces, that pieces is a mirror image of one half to another half, that is known as plane of symmetry. Then we will discuss about the transition temperature furthermore in next lecture. I hope so you will clear that point. Now we will discuss about in उर्दू लैंग्वेज। बेटा आज हमने जो डिस्कस करना है वो सॉलिड स्टेट को डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट वो स्टेट है मैटर की जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में रिजिडिटी आते हैं। रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से 3 डायमेंशन में ये अरेंज होते हैं, इसलिए ये रिजिड होते हैं। अक्सर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली बात, आइसोमॉर्फर क्या होता है? आइसो मीन सेम, मॉर्फर मीन फॉर्म that have same form. Polymorphers mean poly mean two or more than two, or morphers mean different forms that have two or more than two. Different form is called a polymorphous. Then we will discuss about the different difference in isomorphism and polymorphism. बेटा सबसे पहले हमने देखते हैं NaNO3 और KNO3 में ब्रोमोहेड्रल शेप बनती है। हालांकि दोनों के स्टाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट शेप विल बी सेम ड्यू टू because they have same atomic ratio, same atomic ratio, 1:1:3. Second example is silver sulfate and sodium sulfate as octahedral structure बनता है। सो इनकी भी जो एटॉमिक रेशियो वो दोनों की क्या होगी? सेम होगी। ऐसे ही आप देखें आयन में तो नाइट्रेट आयन और कार्बोनेट आयन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इनका। इनका स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि इनकी एटॉमिक रेशियो क्या है? सेम। तो हम ऊपर डेफिनेशन लिखते हैं कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सेम स्ट्रक्चर हो जाए, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ जाए, इसे कहते हैं आइसोमॉर्फस, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। देन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम डिस्कस करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। अब देखिए नीचे एग्जांपल है NaCl। NaCl दो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक एंड ऑक्टाहेड्रल। जैसे अनदर एग्जांपल देखें, एक कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्साइड में और आर्गेनाइड में एग्जिस्ट करता है। कैल्साइड में ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर बनाता है, कैल्साइड में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह कैल्साइड में ऑर्थोरोमिक स्ट्रक्चर है बट ऑर्गेनाइड में टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। इट मीन एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। Then we will discuss about the next difference
कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो एटॉमिक रेशियो पे जिनके स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं उन्हें हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं और आइसोमॉर्फस कहते हैं, और जिनके डिपेंडेंट कहते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीमॉर्फस। और इनकी अब देखें तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दो डिफरेंट क्रिस्टल है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। बट पॉलीमॉर्फिज्म में क्रिस्टल तो है एक ही है, क्योंकि नेचर ऑफ पार्टिकल विल बी सेम, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। देन हम बात करते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल की। हैबिट ऑफ क्रिस्टल मीन जस्ट लाइक दैट कि NaCl में देखें तो आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका हैबिट ऑफ क्रिस्टल है। इट मीन्स जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो करे उसे कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अगर NaCl की क्रिस्टल में 10% यूरिया ऐड कर दें इम्प्योरिटी, तो इसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट हो जाएगी। किस वजह से? इम्प्योरिटी पार्टिकल की वजह से इसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। ग्रोथ पहली बात है क्रिस्टल की किस तरह होती है। जब भी आप हीटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हैं तो क्रिस्टल ग्रो करेंगे, क्रिस्टल ग्रो कर सकते हैं। अब दो तरह की कूलिंग है, रैपिड कूलिंग करें और स्लो कूलिंग करें, तो कौन सी कूलिंग बेहतर है? स्लो कूलिंग करेंगे तो रिफाइंड क्रिस्टल बनेंगे और स्मॉल बनेंगे, मतलब अच्छे क्रिस्टल बनेंगे और छोटे। और अगर रैपिड कूलिंग करेंगे लार्ज क्रिस्टल बनेंगे और बड़े क्रिस्टल बनेंगे और रिफाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। अब विद एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास ग्रेफाइट को अगर पैरेलल डायरेक्शन में आप देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते आपको नजर आएंगे। तो इसलिए पैरेलल डायरेक्शन में ये गुड कंडक्टर है, बट ऊपर से देखेंगे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर डायरेक्शन से तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, ये बैड कंडक्टर होगा। इट मीन ये क्रिस्टल ये अपनी प्रॉपर्टी विद द डायरेक्शन क्या का है, चेंज का है। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो अपनी प्रॉपर्टी विद द डायरेक्शन चेंज करे इसे हम क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रॉपी में आपके पास इफेक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज आती। अब नेक्स्ट है क्लीवेज प्लेन। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कि जब भी आपके पास क्रिस्टल है, आप प्लेन पास करें या हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर, दोनों डायरेक्शन में जब क्रिस्टल ब्रेक होगा, वो जब क्रिस्टल ब्रेक हो उनकी शेप और जो बनने वाले क्रिस्टल है उससे शेप और साइज सेम हो, इसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन। और जैसे निकल सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, इसकी क्लीवेज प्लेन है पैरेलल। और नेक्स्ट हम मूव करें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एनहाइड्राइड की भी क्लीवेज प्लेन पैरेलल होती है। नेक्स्ट हम बात करें सिमेट्री की। सिमेट्री क्या है? जब भी किसी भी क्रिस्टल को आप 360 एंगल पे रोटेट करें, ये इसके एजेस फेसेस और एंगल रिपीट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्रिस्टल जब 360 पे रोटेट करेगा तो पहले जैसी क्रिस्टल की पार्टिकल की अरेंजमेंट और इस क्रिस्टल की पार्टिकल की अरेंजमेंट आफ्टर द रोटेशन विल बी सेम। दोनों क्रिस्टल की पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? सेम होगी आफ्टर द रोटेशन थ्रू द एंगल ऑफ 360। इसलिए इसके अंदर तीन तरह की सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? जब भी आपने किसी भी क्रिस्टल को देखना है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो आपने उसका जो मिडल जो एटम है उससे डिस्टेंस दोनों साइड का देख लें। आइदर साइड्स में डिस्टेंस अगर सेम हो तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री रखेगा। जैसे कॉपर है, यहाँ पे अमोनिया के साथ इधर भी सेम डिस्टेंस में
इधर भी सेम डिस्टेंस पे, तो कॉपर क्या रखते हैं, कॉपर का किस तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। BF3 है, जैसे किसी भी एक एक्सिस को पकड़ के आप रोटेट करें तो उसके एंगल एजेस, और मतलब ये 360 पे जब रोटेट करें एक एक्सिस को पकड़ के एक्सिस के अराउंड रोटेट करें, ये एक्सिस है सपोज 360 पे रोटेट करें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो जाएगा लाइक फर्स्ट वन। तो इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो उसे अगर हम कट करें, उसका एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा, मतलब वन हाफ इज अ मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ होगा। ऐसा अगर हो जाए तो इस मॉलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आई होप सो यहाँ तक आप क्लियर है। देन हमारे पास एक ही रह जाती प्रॉपर्टी है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट उसको हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।